This question is, how is the income summary of the last accounting period connected with the balance sheet of the future accounting periods? Explain preferably using the balance sheet and the income summary equations. This question is of 15 marks, and it is asking about the relationship between the income statement and the balance sheet of the future accounting periods by way of examples. Okay, so what actually balance sheet is? Balance sheet is the statement of assets and liabilities, and profit and loss gives an account of the all profits earned or loss incurred during a particular period, right? Okay, whatever net profit or loss is there, that is being reflected by the P&L account. Okay, now the basic principle of accounting which is being referred to here is, that is matching principle. What does this matching principle says? It, that whatever is the income and expenses, whatever income we are reflecting for a period in the P&L account, the expenses should relate to that income, right? Okay, so like for example, if I have to give you the example, let's say we have paid the rent of rupees 1,50,000 during the year, right? And rupees 15,000 of rent is still to be paid. That is called as outstanding expense, which is not paid. Okay, it has to be paid in the current financial year, but this much amount is not paid. Okay, so its treatment is different as compared to this rent. Okay, so how would we show this? Definitely it belongs to current financial year, and what would be its impact on the next financial year, that has to be shown. Okay, and this will have impact on P&L as well as balance sheet. So by way of adjustment entries, we need to show, like for example, entries for prepaid expenses, entries for outstanding expenses, entries for income received in advance, or entries for even for example depreciation, or entries for income due but not received. These all or entries which are having impact on P&L and balance sheet, right? So we can give the examples of such entries to reflect that the income summary of the last accounting period is related to the future accounting periods, right? Okay, uh, let's check out the adjustment for prepaid expenses, right? Prepaid expenses. Okay, so now let's say I'm just taking the same figures of rent, but considering it that this time the rent is prepaid, not outstanding. Okay, so let's say rent is, again, rent for this year is 50,000, and in this 50,000 I have prepaid rent to the extent of 14,000, right? Okay, so it means this 14,000 prepaid means this belongs to the future, to the next year, but this is paid in advance. Okay, so how it is going to be reflected in P&L? So very neat and cleanly you have to represent these accounts. Okay, so again, rent would be in on expense side, and prepaid rent has to be deducted from this rent expense, because this belongs to my next year. Okay, so less prepaid rent. I would like i would have to show it like this: 50,000 minus 14,000, that is 36,000. Okay, and what would be the corresponding balance sheet? That is, because outstanding expense is my liability, so automatically prepaid rent, that would be the opposite, so it would be acting as asset for the entity, right? So it will be shown under, so this is my asset side of the balance sheet, this is my liability side, right? So prepaid rent 14,000, this will be depicted like this. Okay,
So similarly, we can give an account for income due but not received, and income received in advance, right? So let's take another example other than expenses and income. Let's say we need to create provision for discount on debtors. Given that my debtors are for rupees 5,20,000, provision for doubtful debts, that is given at 1,20,000, and I need to create this provision at 10%, provision for discount on debtors. Okay, so on what amount this provision for discount on debtors would be computed, that has to be looked for. Like, we should know that this provision has to be created on good debtors. Okay, so discount is always anticipated on good debtors. Okay, so whatever is my provision for doubtful debts, that has to be subtracted from the debtors, and then I'll be computing 10% on that figure. So which means 10% of 5,20,000 minus 1,20,000 is rupees 4 lakh, that is 40,000. Okay, clear? So what would be the representation in P&L account? So here I will simply show to provision for discount on debtors, right? That is 40,000. Okay. And what about balance sheet treatment? Debtors are current assets. Okay. So debtors 5 lakh less provision for doubtful debts, that is PDD stands for provision for doubtful debts. Okay, so this is going to be subtracted. What it comes out to be 4 lakh, and then less provision for discount on debtors. So this is my 40,000. Okay, so 4 lakh minus 40,000 is 3 lakh 60,000. So this is how the P&L figures are going to impact the balance sheet figures. We all are representing by way of examples this thing. Okay, again, the important thing which you can give by example is provision for depreciation. So depreciation, whenever you create provision for it, you show it in the expense side of the P&L, and in the balance sheet, whatever is the depreciation amount, that has to be subtracted from the corresponding asset, and the ultimate figure would be reflected in the balance sheet. So respective assets has to be uh, shown along with the amount of depreciation deducted, okay, for that particular year. Okay, right? So P&L would reflect the amount which is deducted on account of depreciation for that particular year, right? So balance sheet figure, that will reflect the figure after total accumulated depreciation. Okay, clear? Fine. So these are the examples which can be shown here to establish the relationship between the income summary and the balance sheet of future periods. Okay, so there can be a number of examples like deferred revenue expenditure, or any abnormal loss, or like goods sold on approval basis, right? You can give a number of examples, okay, by looking at the time constraint also. Okay, next one. Highlight the major factors that need to be considered for proper assessment of quantum of working capital required by a firm. So guys, your entire working capital management revolves around two questions. Question number one, how much to invest in करंट एसेट्स, ठीक है? और दूसरा सवाल क्या होता है? हाउ टू फाइनेंस these
करंट एसेट्स। ठीक है, अब हाउ टू फाइनेंस का मतलब है कि हम कितना शॉर्ट टर्म डेट लेंगे और कितना लॉन्ग टर्म डेट लेंगे। ठीक है, और हाउ मच टू इन्वेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज माय करंट एसेट्स ओवर सेल्स रेशियो। ठीक है, सो योर एंटायर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अराउंड दीज टू क्वेश्चंस ओनली। हमें इसमें क्या पूछा है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड दैट what will decide the quantum of working capital। इसका मतलब our focus is on this part only, our focus is on this part only, that how much to invest in my current assets। great, so with this understanding हम लोग शुरू करते हैं। so guys होता क्या है we have got two options, okay, one is that we have got high investment in current assets, another one is that we have got low investment in current assets। so to understand अच्छा होगा क्या, पहले थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं हाई और लो से क्या फर्क पड़ता है। इफ वी हैव गॉट हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, अगर हमारे पास करंट एसेट हाई है इसका मतलब वी हैव गॉट हाई कैश, वी हैव गॉट हाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमारा इन्वेंट्री हाई है और हाई अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ऑफ कोर्स द बिजनेस विल हैव लेस रिस्क, क्यों, बिकॉज देयर इज इन्वेंट्री हाई, देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ वर्क। अगर अपने अकाउंट रिसीवेबल हाई है इसका मतलब है गॉट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर बिजनेस। ठीक है, देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट हाई कैश, हाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट मींस वी हैव गॉट हाई लिक्विडिटी। तो इससे क्या होगा, the business has got less risk, लेकिन the profitability is also low because the return on current assets is always lower than the return on the fixed assets। so अगर high level of current assets है then low risk but also low profitability। on the other hand, if we have got low level of current assets, इस इस केस में क्या होगा, वी रन हाई रिस्क बट आल्सो दैट देयर इज ऑप्शन ऑफ इट कम्स विद हाई प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी बाय कीपिंग लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स बट दैट कम्स विद हायर रिस्क। देयर हैज टू बी अ there has to be a optimum level। so so you can say high level of current assets, low level of current assets। सो गाइज इसमें क्या होगा, profitability will increase if we go in direction of arrow, but risk will also increase। on the other hand, if we go this side my liquidity will increase। so clearly what we can say is that profitability is directly proportional to risk, also profitability is inversely proportional to liquidity। ठीक है, so now obviously we can see that there has to be a trade off, there has to be a trade off। so how do we decide that trade off, we see that what are the costs associated with carrying the high level of current asset। so we see what are the costs associated with high level of current asset। so ये जो सारी cost है which comes with high level of current assets, so ये कौन कौन सी cost है, opportunity cost, why, because our ROA is low, return on asset is low, then cost of managing inventory cost or warehousing cost, okay, then we have got, because they got now liberal credit policy, so there is a cost of bad debt, then there is also a cost of wastage, because you have got high inventory of course there will be wastage। so that these are also known as your
these are also known as your carrying costs. On the other hand, if we look at cost associated with low level of current assets. So what are these? Because now we got less inventory, less cash, less marketable securities, strict credit policy. So guys, what will happen? We run the risk of stock out और कैश आउट, क्योंकि हमारा लिक्विडिटी कम है, या फिर losing customers. Why? Because they got strict credit policy. So guys, these are known as shortage costs. ठीक है. अब guys होगा क्या? If we draw a graph, ठीक है, and uh, so these are your carrying cost in blue color, and in this another color we have shortage cost. So the total cost will be something like this, and this is the optimal point. This is the optimal point which will decide the right or optimal amount of current assets. So guys, this is how we decide that what is optimum level of quantum of current assets. इसको if you want थोड़ा आगे भी तुम इसको explain कर सकते हो, that if your carrying if your carrying cost is low but shortage costs are high. So guys, इस केस में क्या होगा? So guys, इस केस में because your carrying cost is low, this and shortage cost are high, so your optimal point will suggest high level of current assets. On the other hand, if your carrying costs are high but shortage costs are low, so guys, in this case what will happen, that this will be high and this will be low, so point will be closer to your origin, and this shows this will suggest low level of current assets. So guys, these are various factors which will decide the quantum of working capital which are required by a firm. Okay, question says marketers often adopt means and ways, both fair and unfair, to establish their supremacy in the market. Identify key unethical practices adopted by the marketers and evaluate the existing policy framework for its efficacy. Also suggest suitable policy measures to curb such practices effectively. Okay, so इसमें तीन अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन आपका है कि हमें आइडेंटिफाई करना है की अनएथिकल प्रैक्टिसेस. दूसरी चीज हमें बतानी है कि इसको लेके जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो उसकी एफिकेसी क्या है. तीसरी चीज हमें सजेस्ट भी करना है कि हम कैसे सच प्रैक्टिसेस को कर्ब कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें आंसर लिखना है. तो सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन को टारगेट करते हैं. तो की अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमें लिखनी है. तो की अनएथिकल प्रैक्टिसेस कई सारी प्रकार की हो सकती है. हमें थोड़ा सा अपना आंसर को वैलिड रखना है, तो हम उसका देखते हैं, उसका ट्राई करते हैं. तो पहली चीज हम इसमें बता सकते हैं कि अननेसेसरी हाई प्राइसेस. ठीक है, तो कई बार कंपनीज जो है अपने प्राइसेस को बहुत हाई करती हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज में कई सारा प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है और उसमें एक्सेसिव खर्चा हो रहा है, तो उसके कारण जो आपका प्राइस है वो हाई हो गया, राइट. तो अगर वो मार्केटिंग एक्टिविटीज इतनी ना हो तो प्राइस उतना हाई ना रहे. सो इट इज अगेन अनएथिकल फ्रॉम द कंपनी साइड. सेकेंडली, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं कि कई सारी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कंपनी फॉलो करती हैं. कई बार व्हाट इज डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस मींस के टेलिंग द कंज्यूमर दैट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर बट इन एक्चुअलिटी द वैल्यू इज नॉट दैट मोर. ओके, सो डिसेप्टिव प्रमोशन हो सकता है, डिसेप्टिव पैकेजिंग हो सकती है. तो इस तरीके से डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ये भी अनएथिकल है. तीसरी चीज हम इसमें बता सकते हैं कि सेल्स पर्सन से हमेशा ये चीज एसोसिएट होती है कि देयर आर सम हाई प्रेशर सेलिंग. ठीक है, तो हाई प्रेशर सेलिंग कई सारी इंडस्ट्रीज में हम सब ने देखी है.
जैसे आपका इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज है, तो इसमें देयर इज अ हाई प्रेशर सेलिंग। रिसेंट टाइम में जो एडटेक फॉर्म्स आई हैं, वहां पे कई सारी प्रैक्टिसेस हाई प्रेशर सेलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही हैं। ठीक है, तो कई बार ये लुक्रेटिव भी होती हैं। तो अगेन ऑल ऑफ दिस आर अनएथिकल। ओके, फोर्थ इज शॉर्टी हार्मफुल और अनसेफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कई बार प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं, शॉर्टी होते हैं, अनसेफ होते हैं, तो उनको लेके भी जो जो मार्केटिंग हो रही है वो भी थोड़ी सी अनएथिकल हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है या कुछ भी है, तो उसमें उसमें इट इज अ वेरी कार्बोनेटेड सब्सटेंस एंड उसके कारण कई सारे ओबेसिटी के केसेस आ रहे हैं, जिससे कई सारी प्रोलॉन्ग बीमारियां आ रही हैं। तो उनकी जो एक्सेसिव मार्केटिंग है उसको लेके हम उसमें अनएथिकल एस्पेक्ट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं कि प्लांट ऑब्सोलेनिस। इसका क्या मतलब है कि 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 मतलब जैसे फैशन इंडस्ट्री है, कई बार प्रोडक्ट ऑब्सोलीट ना होने के बाद भी बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द ट्रेंड वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल आपने आज कपड़े लिए बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग, ओवर द टाइम क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। कार्गो पैंट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो आए थे बट ट्रेंड चेंज हो गया, बट अगेन कपड़े की क्वालिटी खराब नहीं हुई, इट्स स्टिल यूजेबल, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ट्रेंड क्या हो गया, आपको नए कपड़े लेने के लिए मजबूर हो गए आप, या फिर एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया। ठीक है, तो वो भी होता है प्लांट ऑब्सोलेनिस। ठीक है, अगेन दिस इज अनएथिकल। पांचवा पॉइंट आप लग सकते हो कि पुअर सर्विसेज टू डिसएडवांटेज कंज्यूमर्स। जैसे आपके जो स्लम्स एरिया होते हैं अर्बन एरियाज में, उसमें क्या होता है कि कई बार जो इंफीरियर प्रोडक्ट्स बेचा जाता है बिकॉज दे डोंट हैव दैट एम्पावरमेंट और द अपॉर्चुनिटी टू बाय इट समवेयर एल्स। ओके, सो दिस इज आल्सो एन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो पहला आंसर आप नाइसली डन कर देंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इट्स एफिकेसी। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कुछ कुछ गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कोड्स होते हैं, जो मतलब इन सारी चीजों को टारगेट करते हैं। तो उनके बारे में आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। हम सभी इस बात से अवेयर हैं कि पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 2019 में फिर से रीड्राफ्ट करके वो किया गया है, इनेक्ट किया गया है 2019 में। तो उसमें इस एक्ट में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो रिलेटेड टू द मार्केटिंग, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। वो क्या क्या है, जैसे आपके रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की लिस्ट दी है। देयर आर प्रोविजंस अगेन एक्सेसिव प्राइस चेंजिंग, राइट, देयर आर प्रोविजंस अगेन अनसेफ प्रोडक्ट्स। सो कई सारी चीजें मार्केटिंग को डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं इसमें। सेकेंडली आप बता सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज एएससीआई अपना कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन निकालता है, जिसमें जो भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है। तो उससे रिलेटेड एएससीआई अपना कोड निकालता है। और इसमें आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि रिसेंट टाइम में ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके कोड आया है कि मतलब हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर को वीक नहीं दिखा सकते हैं, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो इस तरीके से आप बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज आप इसमें लिख सकते हैं कंपटीशन एक्ट, जो कि एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था, कि ये प्रेडेटरी प्राइसिंग हो गया या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल को टोटली प्रोहिबिट करता है, ताकि एक फेयर और एफिशिएंट कंपटीशन आए। ठीक है, चौथी चीज आप देख सकते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके जो भी गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस रहती हैं, जैसे सिगरेट्स एंड टोबैको को लेके जो गवर्नमेंट का एक्ट 2003 का, कि सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2003, जिसके अंतर्गत आप सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट इन सारी अनएथिकल या फिर हार्मफुल मार्केटिंग को डिस्करेज करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पॉलिसी मेजर्स को सजेस्ट करना है। ठीक है, सो अगेन इसमें वर्ड है पॉलिसी मेजर, यानी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। ठीक है, ये और किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट को ध्यान में रख के हम कुछ कुछ रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं? एक तो देखिए बहुत ही जेनरिक होंगी, सारी ही जेनरिक होंगी मेरे हिसाब से, कि अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर हम स्प्रेड कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर ऑफ एनी केस एट कंज्यूमर फोरम,
स्पीडी डिस्पोजल हो गया, राइट। तीसरी चीज हम कर सकते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आए, राइट। चौथी चीज हम स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज रख सकते हैं फॉर एनी एनी ब्रीच, राइट। सो इस तरीके से ना आप अपने आंसर को बिल्डअप कर सकते हैं।